supreme law of the country. It is accepted by the whole society with the consent of the people. ठीक है, whenever like पूरा इंडिया है तो पूरी इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी. इट टेल्स अस लाइक हाउ कंट्री कैसे गवर्न होगा. तो ये सुप्रीम लॉ है. जो भी कंट्री का जो भी लॉ है एक कागज़ वगैरह में लिख के डाल दिया जाता है. फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूशन परफॉर्म्स थ्री बेसिक फंक्शन. डिफाइन करता है पॉलिटिकल बाउंड्री. इट टेल्स अस हु रूल, हाउ पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ विल मेक द लॉज. ठीक है, कि ये कौन बताएगा, कौन रूल करेगा, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हु इज गोइंग टू मेक द लॉज. ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. तो इट tells us who will rule, how power is going to be divided, and who will make laws. It's also important not to know that who is going to make the laws, rules, regulations. to limit the government, the constitution cannot use unlimited power. ठीक है, the constitution जो होता है ना एक restrictions देता है ताकि people के right को प्रोटेक्ट किया जा सके. वैसा तो नहीं है कि ना constitution है तो भाई जितना चाहो उतना power यूज करो. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. explains the government structure, formation of government, types of government, क्या power है, क्या functions, तो everything is defined. So here is monarch. Power lies with one person, one family, or one ideology. Okay, it's only with the one person, like king or queen rules. ठीक है, democracy में क्या people are supreme. Government is elected by the people. Government is elected by the people. Theocracy क्या है, religious leader controls the political systems and laws are based on the religion. 1215 का मैग्ना कार्टा होता है, 1215 में साइन था. इट मार्क्स द ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ. इवन द किंग मेड सब्जेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ. एंड ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी. इट्स अ बिगेस्ट. ये मैग्ना कार्टा जो 1215 में साइन हुआ था, एंड इट मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ. इवन द किंग वॉज मेड सब्जेक्ट टू द लॉ. एंड ये बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग. एग्जाम्पल रेफरेंडम. रेफरेंडम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हो रहा है जैसे रेफरेंडम. तो रेफरेंडम डायरेक्ट का एग्जांपल है. नाउ यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या है, लोग जो होते हैं ना एज अ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. पीपल के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर गोइंग टू मेक लॉ. सिस्टम ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेशन. एग्जाम्पल इंडिया. Now, parliamentary system, executive is a part of the legislation and executive is answerable to the legislation. जैसे कि इंडिया. प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन जो है वो सेपरेट है. एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट जैसे कि यूएसए. एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट जैसे कि यूएसए. एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट जैसे कि यूएसए. ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है, सेपरेट है. एग्जीक्यूटिव क्या है, अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट जैसे यूएसए. ठीक है, प्रेसिडेंशियल. और इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव. ठीक है, इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव. इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव. Separation of power, there is a horizontal distribution of power. Horizontal power of government is divided among different organs to avoid the misuse. John Locke has divided the power into two parts: legislative and executive plus judiciary. Legislative plus executive plus judiciary. Legislative and executive plus judiciary. Legislative and executive plus judiciary. Legislative, and second one is what? Second one is executive plus judiciary. So power has been divided into three parts. Mainly two it is. Executive and legislative are in the same group.
तो देखो जॉन लॉक ने दो पार्ट में पावर को डिवाइड किया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक पार्ट में था। मोंटी क्यू थ्री ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फीचर, विदाउट ए डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, इसके बिना जो है वो डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? माइनामार, लैक ऑफ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर। देखो पावर सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। देखो एग्जीक्यूटिव, देखो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म क्या? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फेडरलिज्म क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है? देखो फेडरलिज्म क्या, पावर जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवाइड हो गया है। टाइप्स अगर हम फेडरलिज्म की बात करें कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, तो अमेरिकन फेडरलिज्म में जो स्टेट है दे आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। स्टेट पहले ही ये नहीं होता, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बिहार यू विल से इज मोर पावरफुल देन इंडिया, इट्स लाइक दिस। तो पावर was given to center through agreement, and how the power was given? Power was given through the agreement. How the power was given? So the power was given through the agreement. How the power was given? The power was given through the agreement. How the power was given? The power was given through the agreement. ठीक है, the power was given through the agreement. How the power was given? So the power was given through the agreement. This is called coming together federation, and this is called what? Coming together federation. This is called what? Coming together federation. Coming together federation. A state existed before the center, and the power was given to the center with the help of what? Agreement. Indian Federation formed due to historical, social and cultural reasons. ठीक है, historical, social and cultural reasons. ठीक है, Indian Federation क्या है? Historical, social and cultural reasons. ठीक है, their federation, historical, social and cultural region, and federation is like due to reasons. Okay, center is of course most powerful than the state, and during emergency center can control the state. Okay, whenever any energy emergency comes, so at that time center will be given the power that it's okay, you can control the state, therefore it is quasi federal, holding together federation, holding together federation. ठीक है, there is no any agreement, they came together through agreement, coming together federation American, and holding together is Indian. ठीक है, constitution is what? It is a supreme law, Magna Carta 1215, democracy, rule of people, separation of power, monarchy. Federation is what? Division of power between the central state, and India is what? Quasi feder. Constitution of India is best described as what? A book of rules made by the judges, a law accepted by the whole society. This is correct. Not a function of the Constitution, defining the boundaries, limiting the power, controlling private life. Of course not. In which political system does a single person or family rules? Monarch. Rule of law refers to what? ठीक है, डेमोक्रेसी, थ्योरेटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पावर लाइज विद द रिलीजियस लीडर्स. ठीक है, मैग्ना कार्टा 1215. मैग्ना कार्टा इज important because it established what? Rule of law. In direct democracy, people directly make laws, and indirectly people elect through the representative. In which system is the executive accountable to the legislation? Parliamentary system, executive is accountable to the legislation. India follows which kind of democracy? So India follows parliamentary.
presidential system, executive and legislatives are separate. Okay, they are not same, they are not responsible for each other, but they are very much separate mm, tenure. Okay, concept of the separation of power was originally given by, okay, it's like who gave the concept of the separation of power? John Locke. Okay, and two power a divided Montague three, who divided legislative, executive, and judiciary is monstrous. Separation of power refers to what horizontal division of power. It's not the vertical one, but it's horizontal division of power. Which of the following is not an organ of the government? Media. Federalism refers to what? Division of power between the center and the state. Okay, this is the federalism when there is a division of power between the center and the state. Whenever you divide the power, that is federation. Which country follows coming together federation? USA. Coming together federation, USA. Quasi federal because center is more powerful than the state. During emergency in India, center always gains what? Extra power. Now, vertical distribution of power is related to federalism. Okay, vertical distribution of power is related to what? Federalism. Horizontal division of power, legislative, executive, and judiciary. And vertical is federalism. India is an example of quasi-federal state. Which system ensures accountability of executive to the legislative? Parliamentary. Democracy survives best when there is when power is divided. Okay, that everybody is knowing that yeah, this is my limit and all. So constitution is a set of what? It is a set of rules and regulations to manage the society. These rules are adopted by the society itself, not forced. In simple work, a rule book to run the country. एक तरीके का rule book है. What does constitution decide? Is the basic framework. ये decide करता है right of the people, nature of the society, what is the political system, formation of the government, power and functions of the government, and also the limitations. Okay, that every government, okay, they are having certain limitations, so it decides that also. Constitutions written, one which is written in a single document, clearly defined, and of course when the constitution is written, it's going to be like there is going to be less confusion, less contradiction, and of course less misuse of the power. Misuse the power a lot, because of course there is going to be a less misuse of the power. Unwritten constitution can no single written document. Government works on multiple sources. Customs हो गया, religion हो गया, parliament laws हो गया. There's like unwritten multiple sources, and you'll not be able to understand like custom, religion, and parliamentary laws. So it's more flexible, easy to change. कोई यूँ लिखा हुआ है तो नहीं change कर remove से. But disadvantages is that there will be misuse, confusion, contradiction. Like Britain, always there is misuse. A problematic situation arises. So the functions of the Constitution. Rule of law. No one is above law. Law applies equally to citizens and the government. Supremacy of the Constitution. The rule of law. That first thing of the first function is rule of law. That no one is above law. Law applies to whom? Government and the people, citizens. Okay, so don't write people there. You can write citizens. It will sound more better, and this ensures what? Supremacy of the constitution. Magna Carta. The idea of rule of law involved from the Magna Carta was signed between two people, King of England and Baron. King of England and Baron. The idea of rule of law came from where? It came from Magna Carta. It was signed between two people, King John of England and Baron. King John and Baron. Importance of Magna Carta क्या limited the power of the king and introduced individual right. ठीक है. तो नंबर वन थिंग इज इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग. Where the power of the king got limited. Okay, it's like there was a limitations that this is the power and you cannot exceed over that. And also it introduced the idea of the individual rights. ठीक है, it introduced the idea of the individual rights. It introduced the idea of what? Individual rights. ठीक है, एक तो हर इंसान का राइट, एंड जो किंग वगैरह का जो पावर था उसको कम करके एक इंसान के राइट को ज़्यादा किया. इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टू थ्योरीज, इंडियन थ्योरी इन एंशियंट धर्मास्त्र एग्जिस्टेड. ठीक है, धर्माशास्त्र एंशियंट इंडिया में. ठीक है, इट इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. धर्माशास्त्र क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? धर्माशास्त्र.
धर्मशास्त्र क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कौन सा कॉन्सेप्ट था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का था। ठीक है, तो देयर आर टू थ्योरी, इंडियन थ्योरी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड धर्मशास्त्र माना जाता था, और यहाँ पे ना लिख के था। वेस्टर्न में कहाँ से आया था? तो ये ग्रीक से आया था। इंडिया तो धर्मशास्त्र, वेस्टर्न ग्रीक से। और ये फोकस कर रहा था ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड गवर्नमेंट पे ये फोकस कर रहा था। Constitutionalism is limiting the power of the government. What is constitutionalism? When you limit the power of the government. ठीक है, government must work within the constitution. Okay, like the government cannot do whatever they want to do. There are limitations, and the government must work within the constitution. The government must work within the constitution. ठीक है, एंड लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इन्हें ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। भाई एक लिमिट है, आप उस लिमिट के अंदर ही रह के करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे दिया गया है, यू नीड टू फॉलो दैट। एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट क्लियरली डिफाइंस लाइक एवरीथिंग। ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ठीक है, एंड देन सेपरेशन ऑफ पावर, कि नो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, एवरीबडी इज नॉट हैविंग द सेम पावर। फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, लाइक यू नीड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, एंड क्लियर पावर स्ट्रक्चर। अर्ली स्टार्टिंग हुआ था ये चार्टर एक्ट 1600 में, गिवन बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड विद चार्टर एक्ट ऑफ द 1600। ठीक है, बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जुडिशियल पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर मिल गया, एंड पावर टू एडमिनिस्टर लॉ। ठीक है, पावर टू एडमिनिस्टर लॉ। डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्ली बिगनिंग चार्टर एक्ट 1600 से हुआ था, गिवन बाय द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी को जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1667 में गिव द कंपनी टू इशू कॉइन। 1667 इशू कॉइन। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा टेरिtorial पावर इंक्रीज हुआ। बैटल ऑफ परासी एंड बक्सर, दीज बैटल डिस्टर्ब्ड द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन लॉस। आफ्टर दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल, ओडिशा, कंपनी गॉट वॉट पावर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन एंड मुगल एम्पायर। ठीक है, कंपनी को पावर कैसे मिल गया? ब्रिटिश क्राउन एंड मुगल एम्पायर से पावर मिल गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन एंड मुगल एम्पायर से पावर मिल गया। फिर क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल द कंपनी। ठीक है, दिस वाज व्हाट, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि इसमें था कि नहीं, तो अब तो हमको कंट्रोल करना ही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिहार में 1774 में आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से सारी चीज़ बदलती है, यहाँ से नहीं, मतलब एक होता है बिगिनिंग ऑफ द कंट्रोल, तो इट वॉज हियर ओनली। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जी 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 जी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे? द फर्स्ट वन वाज वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग, तो पहले वाले कौन थे? तो वैरन हेस्टिंग। ठीक है, पहले वाले कौन थे? तो इट वाज वैरन हेस्टिंग। कौन थे? वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग थे, तो कौन थे? वैरन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज वैरन हेस्टिंग। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबॉर्डिनेट। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर को सबॉर्डिनेट बना दिया गया, एंड अ 4 मेंबर काउंसिल असिस्टेड द गवर्नर जनरल। ठीक है, एंड 4 मेंबर काउंसिल आ गया, एंड सुप्रीम कोर्ट जो था 1774 में असिस्ट करने के लिए बना दिया गया। कब बना दिया गया? सुप्रीम कोर्ट 1774 में। 1774 में क्या बन गया? तो सुप्रीम कोर्ट बन गया था कि असिस्ट किया जा सके। हाँ हाँ हाँ। Problem, jurisdiction of the Supreme Court was unclear, but Supreme Court was established, but the jurisdiction was unclear and led to judicial conflict, which led to what? Judicial conflict. ठीक है, judicial was unclear, so judicial conflict started. Fit India Act 1784, failure of the Regulating Act 1773, main feature. Supreme power jurisdiction clarified, board of control created. Okay, now board of control and board of control ने क्या करा? Political affairs control करा, member appointed by the British and Parliament and Crown. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कमर्शियल अफेयर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा? मैनेज करा कमर्शियल अफेयर। एंड देन नेक्स्ट इट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंक्रीज्ड एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड प्रोवाइड व्हाट? स्टेबल एंड यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हियर इट इज द मेन features for Supreme Court jurisdiction clarified, board of control was created. It controlled political affairs, member appointed by the British, and whosoever the member was, they were appointed by the British and Parliament and Crown. Court of Director was the who managed the commercial affairs. ठीक है,
The question can be asked like who managed the commercial affairs? It was court of director who did so. British government control increased. First, with the second act of the control is going to be increased and provided what stable and unitary administration. Main function was to limit the government power because in regulating and the power expanded to a large extent. Constitution ensured place for the democratic development. Constitution can be defined as the rules adopted by the society. The constitution mainly defines the right of right of people and power of the government, which of the following is not decided. Personal habit of the people. Written law means rule written by a single document. One major advantage of the written constitution is limited misuse of the power. An unwritten constitution is based on custom, religion, and parliamentary laws. The main advantage of the unwritten constitution is flexibility that you can change whenever you want to. Biggest drawback is what chances of the contradiction and misuse. Rule of law means no one is above the law. Rule of law ensures what supremacy of the constitution. No one is above law. Rule of law evolved from the Magna Carta. Magna Carta was signed between King George and the Baron. Magna Carta is important because it introduced the individual rights. According to the Indian theory, the Indian Constitution was, it came from Dharmashastra. Western theory is related to Greek, not Egyptian. I don't know why you got confused. We have already studied that it was a Greek thing. Constitutionalism means what? Limitations on government power, so that government cannot do whatever they want to. Which of the following is not an element of the constitutionalism? Absolute monarch. Judicial review means what? Judicial review laws and actions. Okay, judiciary reviews laws and actions. Judicial review means what? Judiciary when you review the laws and the actions. Okay, judiciary when you review the laws and the action. Next is what Indian Constitution began. When it began. So the question is Charter Act of 1600. From here the thing started. So do not get confused with it. The Charter Act was given by whom? British Crown. Which power was given to East India Company? Initially it was judiciary and the legislative power. The Charter Act of the 1667 gave the power to issue coin. Battle of Palasi and Bucks are important because they disrupted the imperial constitutionalism order. After the Banite of Bihar, Bengal, and Odisha, the company authority came from British Crown and Mughal Empire. British Crown and the Mughal Empire. Regulating Act was important because it was the first time to regulate the company's administration. Under regulating and the Bihar became Governor General of Bihar. The first Governor General of Bengal, Conte Warren Hastings. First Governor General of Bengal, Conte Warren Hastings. First Governor General of Bengal, Conte, it was Warren Hastings. First Governor General of Bengal, Conte, it was Warren Hastings. First Governor General of the Bengal, Conte, it was Warren Hastings. Next is what the Supreme Court at Calcutta was established in 1774. So it is like when I'm not asking about the regulating act, I'm asking about that when the Supreme Court was established. So please do not get confused. The failure of act led to the Pitt Act 1784, Regulating Act 1773, Regulating Act 1773. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तभी तो दूसरा वाला एक्ट है. देखो कितना इजी क्वेश्चन तुम लोग नहीं दे पा रहे हो जवाब. पिट इंडिया एक्ट 1784 क्रिएटेड व्हाट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल. चार्टर एक्ट 1830 ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? मेनी ब्रिटिश कंपनी लॉस्ट मार्केट इन अमेरिका एंड यूरोप में. बहुत सारी ब्रिटिश कंपनीज की मार्केट चली गई. अमेरिका यूरोप में बहुत सारा उनका चल रहा था, ब्रिटिश बहुत खुश थे. लेकिन चार्टर एक्ट आता है और वो बहुत कुछ लूज़ कर जाते हैं. तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अब उनको था कि दे वांटेड टू डू फ्री ट्रेड विद इन इंडिया. तो अब उनको था कि अब हम फ्री करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, हर जगह इंडस्ट्रीज आ चुकी है. मेरी इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही थी. ब्रिटिश ने सोचा अमेरिका यूरोप
में, लेकिन अब वो गिर गया। तो अब ब्रिटिश को था कि नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्री ट्रेड, अब हम टैक्स नहीं करेंगे, अब इंडिया ही बचा है जिसको हम हड़प लें। तो प्रेशर इंक्रीज टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली, कि अपना अब ये था कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली था, तो ब्रिटिश ने कहा कि अब हमको फ्री ट्रेड करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ो, अब हम आके डायरेक्ट क्राउन में ट्रांसफ़र करने का सोच रहे थे। तो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड द ट्रेड फॉर ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद द चाइना। क्रिश्चियन मिशनरीज 1813 में अलाउ किए गए थे कि ठीक है आप आ सकते हैं, ओनली विद द ब्रिटिश, लेकिन का परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद। ठीक है, इट वॉज लाइक ठीक है आप आ तो सकते हैं लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद। ठीक है, इट वॉज लाइक कि ठीक है आप आ सकते हैं बट आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही आ सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से पहले आप नहीं आ सकते हैं। तो पीपल वर लाइक ठीक है भाई, अब अगर यही है जो है, मतलब क्या करें। Company was required to spend 1 lakh per year on the education of Indians. ठीक है, accepted the principle state is responsible for education of its subject, ये state ही education वगैरह के लिए करेगा। Britain started producing machine made goods. India made market for the British goods and beginning of the economic exploitation. ठीक है, यहाँ से economic exploitation होता है। अब चार्टर एक्ट 1833 में नॉर्मल सी बात है, एक जो डेवलपमेंट था वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट वगैरह था वो क्या होता है, चार्टर एक्ट 1833 में जो भी डेवलपमेंट वगैरह था, जो भी था वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यूरोप में और अमेरिका में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल जो था बिकेम अननेसेसरी, और ये भी चीज़ हो गया ना कि ईस्ट इंडिया का जो रोल था ना वो अननेसेसरी हो गया। गाइस ये बच्चा जो है ना वो मेरा पेन ले चुका है, और आप जितना भी स्टाइलस मांगोगे इस बच्चे से, दिस गर्ल इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न योर बैक, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ज़िद्दी बच्चा, है ना। देखो, और ये पेन खा लेगा ये बच्चा, बट पेन देना इज़ नॉट सेफ, इसलिए एट द एंड यू नीड टू टेक बैक योर थिंग। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ सेफ़ नहीं है, ये कोई टॉय नहीं है, इट इज़ अ चाइल्ड, इट इज़ अ किड, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। इट्स You can see this a small baby eating my stylus. बट ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई छोटी चीज़ खाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नीड टू टेक बैक, बिकॉज सेफ्टी मैटर्स द मोस्ट, एंड इफ़ यू कैन नॉट हैंडल these small babies, please do not keep them with yourself, because the moment you have babies with you, you have the responsibility which you can't escape. ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप और अमेरिका में होता है, और डिमांडेड फ्री ट्रेड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल रोल है। यहाँ पे मेन फीचर्स क्या होता है, कंपनी मोनोपोली ओवर जो जो टी वगैरह में था 33 में अबॉलिश हो गया। प्रोविंसेस लॉस्ट द पावर टू मेक लॉस, पहले प्रोविंसेस वर हैविंग द पावर टू मेक लॉस, बट यहाँ पे जाके ना प्रोविंसेस का जो पावर था टू मेक लॉस वो ख़त्म हो गया। विलियम बेंटिक, ठीक है, प्रोमे पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड। ठीक है, पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल, अब आ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट विलियम बेंटिक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वर क्रिएटेड। ठीक है, फर्स्ट विलियम बेंटिक एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वर क्रिएटेड, इंक्लूडेड आगरा एंड वेस्टर्न अवध। ठीक है, एंड मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रॉमिस किया गया था कि मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का फोर्थ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल। कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंक्रीज, एंड फाउंडेशन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज इन इंडिया।
चार्टर एक्ट 1853 कंपनी लॉस्ट ऑल ट्रेडिंग मोनोपोली, ठीक है, जितना भी ट्रेड मोनोपोली था कंपनी ने लॉस्ट कर दिया। स्टिल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन के रह गया। नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेपरेशन ऑफ पावर क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ मेकिंग था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। ओपन कंपटीशन इंप्रूव हो गया था इंडियन सिविल सर्विस में। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस गॉट लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकल काउंसिल। दो इंडिया अ मिनी लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज क्रिएटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में रिवॉल्ट ऑफ द 17 1857 होता है। कंपनी रियलाइज करते हैं कि कंपनी रूल फेल हो चुका है। ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। मेन फीचर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर फ्रॉम द company to the company crown। Post of Secretary of State was created, link between the British Parliament and the Viceroy. 15-member council were created to, assist the Secretary of the State. British promised no interference with the religion या तो racial discrimination जो भी हो रहा है, तो ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, हम बीच में नहीं आएंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि हम बीच में आए तो हम नहीं आएंगे। तो ब्रिटिश वॉज लाइक वेरी क्लियर, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बीच में नहीं आना चाहिए तो हम बीच में नहीं आएंगे। There was 15-member council was created to assess the Secretary of the State. No interference, and Lord Canning became the first viceroy here. The British Crown claimed responsibility of providing good government in India. So here the responsibility of the good government came, and the beginning of the direct British law. The education and end of monopoly except tea and China 1813, 1833 Governor General of India plus trade monopoly 1853 ICS plus Legislative Council and 1858 Crown rule. Charter Act 1813 is mainly related to end of the trade monopoly of the East India Company. 1813 company monopoly was abolished except the monopoly of tea and China, को छोड़ के। 1813 Charter Act 1813 allowed the entry of the Christian missionaries, ठीक है। Charter Act 1813 allowed the entry of what, Christian missionaries. The amount fixed for the education for the Indians under 1813 was 1 lakh. Charter Act 1813 accepted the people state responsibility for Indians, ठीक है। Accepted what are the state responsibilities for the Indians. One major result of the Charter Act was economic exploitation of India, ठीक है। economic exploitation of the India, ठीक है। economic exploitation of India, ठीक है। economic exploitation of India, ठीक है। ये क्या था, economic exploitation of India, ठीक है। चार्टर एक्ट 1830 मेड द कंपनी प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना क्या था, अबॉलिश हो गया। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। Charter Act 1833 deprived provinces of the law-making power. Which member was added to the Governor General 1833? Law member. North-West provinces were created under Charter Act 1833. Charter Act 1833. Charter Act 1833. Employment on merit, ठीक है, was promised in Charter Act 1833 में ही ये दो चीज़ हुआ था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द मेरिट, ठीक है। Charter Act 1833 deprived provinces of the law-making body. Which member was added to the Governor General in 1833? Law member. फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल क्या था, 1833 में था। ओपन कॉम्पिटिशन, ICS, सेपरेशन ऑफ पावर अंडर चार्टर एक्ट क्या था, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया गॉट रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम इंडिया को मिला, ठीक है। चार्टर एक्ट एस्टैब्लिश्ड व्हाट, मिनी लेजिस्लेटिव एट द सेंटर। 1853 चार्टर एक्ट 1853 ने क्या करा, मिनी लेजिस्लेटिव एट द सेंटर हुआ, ठीक है। मिनी लेजिस्लेटिव एट द सेंटर। After 1858, administrative of India was transferred to British Crown. Who became the first Viceroy? Lord Canning. Secretary of State acted as a link between the British Parliament and the Viceroy. How many members assisted Secretary of Council? 15. Who promised under the government of 1858 no interference? Government of India Act 1858 marked the beginning of what? Direct British rule.
इंडियन कौंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, एंड 1858 फेल ड्यू टू द ब्रिंग द रियल रिफॉर्म, राइज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ग्रोइंग रिफॉर्म फॉर द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, ठीक है। मेन स्ट्रेंथ क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूअल council got the power to introduce bill except the matters like the reference and foreign ministers. वाइसरॉय got ordinance making power, किसको मिल गया? तो वाइसरॉय को मिल गया ordinance making power, एंड हाई कोर्ट established in different provinces, ठीक है, हाई कोर्ट हर प्रोविंसेस में establish हो गया, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, वाइसरॉय को इंट्रोड्यूस मिल गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पोर्टफोलियो एंड कैबिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, failed to fulfill India's expectation and reform was limited. Indian Control Act 1892 क्या है? Indian Council Act 1861 failed to satisfy the liberal Indian opinion, ठीक है। Indian Council Act 1892 में क्या होता है, ठीक है, 1861 तो फेल ही हो गया, ठीक है। Indian Council Act 1861 viceroy ordinating power, high court established different provinces, uniform legal system, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज द डिमांड ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियाज पार्टिसिपेशन, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इंक्रीज्ड, मैक्सिमम 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20. नाउ legislative council expanded with more Indian member, legislative council expanded and now there were more Indian member, power of the nomination as seated with Calcutta Chamber of the Commerce, and legislative allowed to discuss the budget, member could discuss but not vote, no right to ask supplementary questions. Indian Council Act 1909, British wanted to win over the moderates, ठीक है। British wanted to do what? British wanted to win over the moderates. मेन फीचर क्या था? स्ट्रेंथन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 60 to 60. Now four category was introduced. Ex officio member, nominated member of non-officials member, nominated officials member, elected member, and ex officio elected. Nominated official, nominated non-official, introduction of election for the first time, and separate electorate for the Muslim, and membership also allowed to discuss budget, ask the questions, suggest amendment, and initial legislative. Separation electorate depends Hindu Muslim divide, strengthen the communal politics and democracy introduced. Government of India Act 1919 Montague Churchill for reform. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है तो प्रेशर आता है फ्रॉम द होम रूल लीग मूवमेंट एंड द लखनऊ पैक्ट. बाई कैमरल लेजिस्लेटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड. लोअर हाउस 144 मेंबर, जिसमें 103 वॉज इलेक्टेड एंड 41 नॉमिनेटेड, 103 इलेक्टेड, एंड अपर में 60, यहाँ पे 33 elected. Direct introduced reserve subject controlled by the governor and transferred was controlled by the Indian minister. Reserve subject governor and transferred was controlled by the Indian minister. So the diarchy was introduced. So where reserved was controlled by the governor and transferred was controlled by Indian minister. Transferred Indian minister. Diarchy created confusion and the dual control. Executive was not responsible to the legislative, and also the executive was not responsible to the legislative. Executive was not responsible to the legislative. Diarchy created confusion and dual government. Executive was not responsible to the legislative and failed to satisfy the Indian administration. Government of India 935 आया था जब 7 कमीशन रिपोर्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया था, ऐसा कुछ चल रहा था. मेन फीचर्स था ऑल इंडिया फेडरेशन इंट्रोड्यूस्ड, इंक्लूडेड ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट. ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट दोनों चीज़ को ये इंट्रोड्यूस करा था. तो ये क्या इंट्रोड्यूस करा था? ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट. ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, ये दोनों चीज़ को इंक्लूड करा था. तो ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडेड ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट. इट वॉज नेवर बट इम्प्लीमेंटेड. ओके. Diarchy introduced at the center. Subjects were divided into 3 lists: union, state, and concurrent. Residuary power in the viceroy and federal court was established. RBI established what? RBI was established separate electorate, Sikh, Anglo-Indian, and Indian Christian. Sikh, Anglo-Indian, and Indian Christians.
and franchise remained limited. 1861 Portfolio System and High Court. 1892 Budget Discussion and No Voting. 1909 Separate Electorate. 1919 Diarchy in Provinces. 935 Federal Scheme. 919 Diarchy. 909 Separate Electorate. 1892 Budget and 1861 Portfolio System. Indian Council Act 1861 was passed mainly because of the failure of the 1858 and rise of the nationalist movement. Under Indian Council Act 1861, strength of the Governor General Executive क्या था? 6 to 12 इंक्रीज हुआ था. ठीक है, 6 to 12 इंक्रीज हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में. And the viceroy under the Indian 61 में it was like the power they were having was the ordinance making power. The viceroys were having what kind of power? So the viceroys were having ordinance making power. So what kind of powers viceroys were having? So the viceroys were having ordinance making powers. Okay, so what kind of power was the viceroys having? So viceroys were having the ordinance making power. Which power was given to the viceroy under the act of the 1861? So it was ordinance making power. They were having ordinance making power. Next was Indian Council Act associated with the introduction of portfolio and the cabinet system. Indian Council Act 1892 mainly aimed at increasing the India's participation. They can discuss budget without voting. This was also Indian Council Act 1892, which act allowed associations like Kolkata Chamber of Commerce. So 1892 Kolkata Chamber of Commerce. Indian Council Act is also known as Monte Mello reforms. Separate electorate for the Muslims in 1909. The number of members in the Central Legislative Council increased from 16 to 60. In which act? Okay. 1890, 1909, 1909 Government of India Act 1990 introduced diarchy in the provinces. Bicameral legislative at the centre was introduced by 1919 Act. Under 1919, subjects were divided into reserved and transferred. So subjects were divided into reserved and transferred. The Government of India Act 1935 promotes All India Federation. Now the division of subjects was done. Okay. A state concurrent list was done in 1935 Act. Residuary power under the Act of the 1935 was given to the Viceroy. Which institution was established in 1935? RBI. Separate electorate extended to the Sikh, Anglo-Indian and Christians. 1935 Act. Franchise in the Government of India in 1935 was limited and property based. Which act introduced the main source of the Indian Constitution? 1935.